from 2013 batch. Amlan Patti, Panasonic smartphone. अमलान को बुक करेगा अभिलाष। हाँ, और फिर हमारे डीन को बुके देगा गौतम या शगुन कौन? शगुन। शगुन। या फिर गौतम को बोल दो अगर वो जो भी है। गौतम को जस्ट बोलना है तो वो शगुन को देने दें, बता के बोल देगा। This was made possible because of the hard work of a number of people. Soumya, ये सुनो Distinguished guests, members of faculty, and my fellow future managers, a very good evening to you all. Welcome to the final day of Conventus 2016, the annual management conclave of International Management Institute, New Delhi. I, Soumya, and my co-compare Yash will take you through this valedictory ceremony. This year, Conventus is structured around the theme Transforming Corporate India, Transcending Innovation Towards Strategic Sustenance. India today is in uncharted waters with never seen before growth in the business world and with the increasing number of startups, SBUs, and subsidiaries adding to the burgeoning number of businesses in the country. Innovation is no longer sufficient for any business to survive, let alone to be able to thrive. Corporate India needs to strategize its vision for the future with sustenance in mind. With the multitude of companies now offering the same product offered earlier by just a few, it's understandable that the life cycle has considerably reduced. However, this shouldn't be taken as an excuse to give up, rather, as a challenge to overcome. All that needs to be done is to strategize the corporate world in whichever way it suits businesses, such that they transcend beyond innovation and enter into the realm of strategic sustenance. Hence, the industries should prepare for the long term survival in today's fast changing and constantly evolving market space. Now, let's have a look at the Conventus video.
last 3 days over the 8 summits. This very theme has been made clearer to us by eminent personalities of the business world. The marketing, finance, operations, human resource, economics, strategy, and the information management and analytics summits have helped us develop greater insights into the marketing world and the greater understanding of brand India and its implications to businesses both nationally and internationally. Our rich and varied pool of guest speakers has helped us derive greater insights into the corporate world and its implications. For this experience, we, the students of IMI, will be eternally grateful. Today, for this valedictory ceremony, we are privileged to have with us Mr. Pankaj Rana as our chief guest. Mr. Rana is the business head of the mobility division of Panasonic India, overseeing the company's current operations in South Asia as well as its expansion into the Middle East and Africa. In his current designation, Mr. Rana is responsible for the cross functional management and development of product, sales, marketing, and service for Panasonic's mobility division. Prior to joining Panasonic India, his 12-year-long career in the consumer electronics industry spans product and strategy planning roles at BenQ, Reliance Retail, SGS India, and Eureka Forbes. Since the time he joined Panasonic in 2012, Mr. Rana has played an instrumental role in establishing Panasonic's Viera range of televisions in the Indian market, as well as increasing the company's market penetration across Tier 2 and Tier 3 cities in India. In his last 2 years' experience as business head, Mr. Rana has established Panasonic's smartphone portfolio in the Indian market as well as augmented its market share from 0.5% to 3%. Along with launching Panasonic's flagship Ulega series, he is credited with developing a unique business ecosystem in India, South Asia, China, and Japan for mobility business. Mr. Rana has a deep and comprehensive understanding of product, brand, and category management, having handled multiple B2C electronics categories over his career. His specialization lies in developing and strategizing new businesses, retail channel management, and market mapping and market penetration strategy. His substantial experience of working in cross cultural environments has made him a leader with exemplary team management and interpersonal skills. His innate grasp of market dynamics and consumer behavior. Mr. Rana has been awarded the Global President Excellence Award for exceptional performance during the financial year 2014-15, as well as Outstanding Leader Award in 2010-11 and Outstanding Performer in 2009-10. In the financial year 2015-16, Mr. Rana's mobility business has been recognized as the fastest emerging business verticals of Panasonic India. He is equally proficient in establishing complete ecosystem in domain of smartphones, Internet of Things, wearables, m-commerce, voice over LTE, and voice over Wi-Fi with strategic and operational expertise to manage and lead the business profitably. As technology-centric business professional, Mr. Rana is a vicarious observer and is currently keeping a focused watch on developments in the domains of fifth generation mobile networks 5G, connected cars, smart cities, software-defined networking, and network function virtualization.
Another strength of Mr. Rana is not only possessing analytical mindset as a gold medalist engineer, but also value-centric thought process which helps him to lead the respective teams constructively, liaison effectively with management teams, industry experts, industrial bodies, government agencies, and makes him a well-liked as values-driven business leader. He is also a vivacious in delivering guest lectures to budding young talents in business schools and engineering institutions as a guest speaker to make them comprehend the realities of corporate world so that they can orient themselves accordingly. I would now like to invite our Dean, Academics and Alumni Relations, Professor Arvind Chaturvedi, to present our chief guest with a bouquet as a token of our gratitude. We are truly privileged to have you with us here today, sir. We also have amongst us one of our very own, an alumni of 2013 batch, Mr. Amlan Patti, Business Planning and Strategy Manager at Panasonic Smartphones. I would like to request Press Abhilash Patil, President Council of Student Affairs, to present Mr. Patti with a bouquet as a token of our appreciation. We are privileged to have you with us here today, sir. We also have with us our Dean, Academics and Alumni Relations, Professor Arvind Chaturvedi. Professor Arvind Chaturvedi has been with IMI New Delhi since 2005. He has formerly been with the Institute of Management Technology, IMT Ghaziabad, Administrative Staff College of India, Hyderabad, and School of Communications and Management Studies, Cochin. He was awarded doctorate in PhD by IIT Delhi on impact of economic reforms on poverty and income distribution in India, a comparison with China. He has also authored a research-based book, Consumption Expenditure Inequalities in Rural India, in the year 1990, which was published by Birla Foundation for Economic Research, New Delhi. His current research interests include interstate inequality, disparity, and convergence in India and China. He has also extensively written on business, economy, and consumer issues and contributed to more than 500 articles in newspapers and magazines. He has worked as an independent consultant in marketing and advertising research for several years and has conducted consulting assignments for a large number of FMCG companies, advertising agencies, Ministry of Agriculture, Government of India, World Health Organization, International Labour Organization, and UNICEF. He has been a visiting faculty to many B schools, including IMT, IIFT, BITS CDC, BIMTech, and NIFM. Sir has also been a visiting faculty at University of Hyderabad to teach MPhil students. I would now like to request Abhilash Patil, President, Council of Student Affairs, to present Professor Arvind Chaturvedi a bouquet as a token of a gratitude. To take the ceremony further, I now invite Gautam Krishna Kumar, General Secretary Clubs, to address the gathering. Distinguished Chief Guest, Mr. Pankaj Rana, Honorable Dean Academics and Alumni Relations, Professor Arvind Chaturvedi, Mr. Amlan Patti, members of faculty, staff, and my fellow future managers, a very good evening to one and all. As it is rightly said, all good things come to an end. We need to inculcate in our practices the crucial insights that we acquired from the diverse summits of Conventus2016. Hard work, commitment, teamwork, and striving for brilliance are the key takeaways for a business school. Each of these aspects was experienced by the student fraternity during the journey of the annual management conclave, Conventus2016. With the wisdom of the distinguished leaders from the corporate world, the eagerness of the students to learn, and the passion of the organizers,
we could fulfill our esteemed endeavors. The 3-day mega event witnessed 8 summits in the domains of marketing, finance, operations, HR, information management and analytics, economics, entrepreneurship, and strategy. The inauguration set the tone with the august presence of Mr. Sandeep Tharkis, CEO, Sports Media and Special Projects, Future Group. The session spread over the 3 days and witnessed the gracious presence of more than 40 eminent leaders, including Mr. Tarun Puri, Head Own Retail, Adidas Group, Mr. Sanjay Kumar, Senior Director, Deloitte India, Mr. D.B. Shastri, Executive Director, HR, GAIL India Limited, Mr. Avinash Mathur, Director, Supply Chain and Planning, Whirlpool India, Mr. Tushar Makkar, Director, Strategy and Communication, SAP India, and Mr. Samarendra Chatterjee, Executive President, Sulabh International, just to name a few. The confluence truly turned out to be a converging point, with myriad ideas and different viewpoints connected around the central theme, transforming corporate India, transcending innovation towards strategic sustenance. I, on behalf of the entire student fraternity, would sincerely like to thank our respected Director General Sir, distinguished faculty members, alumnus, students, support staff, and every member of the IMI fraternity who has contributed to the success of this event. We would also like to thank all our sponsors for making Conventus 2016 an unparalleled success. We hope that Conventus will only grow bigger and better with each passing year and continue to be our window to the ever-dynamic corporate world. To conclude, I would like to share a few words as quoted fittingly by Mr. Jerry Zucker. It doesn't matter that your dream came true if you spent your whole life sleeping. So get out there and go for it, but don't be caught waiting. It's great to plan for your future. Just don't live there, because really nothing ever happens in the future. Whatever happens, happens now. So live your life where the action is now. Thank you. Thank you, Gautam, for enlightening us and sharing with us the story of Conventus 2016. I would now like to invite our chief guest, Mr. Pankaj Rana, to address the gathering present today. So, good evening, everyone. Yeah. So, first of all, before I start, how much time do I have? Any time limit? Okay. Because actually, I speak a lot. I'm from marketing. I speak a lot. Okay. So, probably 10 minutes is okay. Okay. Fine. Good. So, so first of all, I'm feeling really honored, or basically humbled also, that all of you, including Dean Mr. Arvind Chaturvedi, and faculty and all the basically the organizers or the students of Conventus has invited me here. So it's being Sunday evening, it's basically family time, but it's okay. I love to interact most of you because as this is a theme also, this IMI makes the leaders for the global world, correct? If I'm not wrong. So you guys had, I think, 8 sessions over here in different subjects, and all experts from HR, marketing, strategy, and then logistics, supply chain, IT, everybody was here from different corporates. So I'll not touch anything technical. And first of all, let me tell you, whosoever has given my brief, I don't know, Amlan or somebody from marketing. So first time somebody has described me in such a lengthy way. Even I have not prepared my CV in last 6 years. So I don't know about me that much. Even my wife doesn't know about much. So all positive things you talked, she only knows all bad things about me, maybe. Correct? So it was a quite lengthy description about me, and I have not done anything like that. I'm one of you. Few years before, I was on the same desk. Might be I look a little old because of my weight, but I'm only 35. So I'll share few things. Can I have the either hand mic or collar mic? Hand mic is little, I'll be more comfortable. Okay. So I have not prepared my speech, in fact, also. Since morning, or maybe since yesterday, my wife was asking that, I think you are going to address few students. So have you prepared your speech? I said, no, I have not prepared speech, and neither I'll prepare. I'll just, it's on. Hello? Yeah. So I said, I'll just go and speak. What I think is right for me in last 8, maybe 10, 12 years in corporate world must be the right for you also. So I have not structured my speech. So don't rate me or evaluate me after my 10 minutes of discussion with you. So I'll just share my insights, that what helped me
to reach whatever level I have reached. Frankly speaking, if you rate me, I have not reached anywhere. There are people in the world. You see Sundar Pichai, he is heading Google globally. And you see Mr. Satya Nadella, he is heading Microsoft globally. So if you ask me, so these two business leaders are my ideal also. I may or may not reach that scale or that level in next maybe 15, 20 years of corporate world, but I certainly try to reach somewhere, correct? So this is how I feel one should be. One should be true. One should be true to yourself. And as I always explain to my sales people or my juniors, my colleagues, that you keep doing your good work or the best work. For example, to Amlan also, every year he comes to me, sir, how will be the appraisal this year? I said, don't worry about your appraisals. So it would be all fine. So sorry, I'm changing mics again. So 2 minutes extra I'll take. Ready? Okay. Hello? Yeah, fine. So I was on the subject that Amlan comes to me maybe after 6 months or 1 year, that how would be the appraisal this year. So I always say one thing to all my reportees, directly or indirectly: if you do good work, so then company will recognize you and they will surely promote you. But just in case, because of so many people within the organization, so many financial implications within the organization, just in case, if company will not recognize you, competition will recognize you and they will pick you up. So why you are worrying about whether you are being appraised or not appraised? It's your work which really matters. And I'm not a motivational speaker. I do, or myself, attends motivational talks most of the time. And I'm too young for my other colleagues which are there in the Panasonic India. So I go for most of the one-to-one motivational program, you say, or strategy building, or how to prepare yourself for the future. I myself is a student at this moment, and I am undergoing 9 sessions under Dr. Gulraj Singh Shahpuri. He is one of the finest motivational speaker or a 101 coach. So I have just attended 2 of his classes, maybe last 2 weeks or 3 weeks. So I have 6, 7 classes pending. So I myself want to keep as a student. So now coming to important things, that what makes your professional career, whether you choose to be a professional or an entrepreneur after you graduate from IMI. So 3 things which matters in life. I think these 3 words are nothing new, which I will tell all of you. All of you know these things better than me, or you might have heard from better people than me. One of them, biggest thing which is really has created some success for me and some recognition for me where I have worked, is the passion. The word passion is very simple, but it's mostly undervalued term. Whichever organization you join, it doesn't matter. Someone among you will join Google also, who is the world's #1 organization, and someone will join organization like SGS, which I also joined as a starter organization, which nobody knows what is SGS. It doesn't matter that what is SGS. So what matters in your life, whichever organization you join, and whichever profile or area you will handle, how great work you will do over there. This was my motto when I started my career 13 years or 12 years before. I started, my salary in SGS was 6,000 rupees 12 years before per month. Anyways, that time salary was not that high. Though I am not too old again, but 12 years is a big gap in today's world. So 6,000 rupees I started, whereas my colleagues, I was a BTech gold medalist among around 700, 800 students. I was #1, but I didn't appear for any campus placements of TCS, Infosys, Wipro, because I was very, very clear that if I will go into the field of software, I will become nobody. Well, I was not expert in the field of software, or in fact, in the field of coding. There was one subject in the engineering, computer, something related to computer, and in the paper, I still remember there were 8 questions. Out of 8, you have to do 5, correct? And 20 each, 100 marks was a paper. Fortunately or unfortunately for me, only 45 marks were the non-programming questions. Rest, everything was programming question. And I didn't know nothing about programming because I had no interest in programming. So what I did, so this is again, I'm telling you a story which you can relate
when things are good or bad at your end. So paper in front of me, I only knew 45 marks paper, 40 is the passing. So what to do? Either you go out and prepare for the next session. So that time I thought as a student, I have a 3 hours and 45 marks I can only do. So what to do? But I know those answers well for those 45 marks. So I wrote in 3 hours those 2.5 questions, or maybe less than 2.5 questions in 3 hours in such a beautiful writing. I think using 2 or 3 pens, full sheets, number of sheets were complete. And it was so beautifully written. I have never done such a beautiful paper in my life. That was the best paper in my life. That time, I think this now also you cannot take cameras or those things in the exams. That time it was not allowed. Otherwise, I could have taken photographs and shown to my daughter or my wife someday. Okay, so exam over, 3 hours, only 45 minutes attempted, all sheets full. It was the best handwritten paper by me, though my handwriting was not that bad also. So now what happened after that? All students like me, those who are not good at programming, they started attending the coaching classes that after 6 months of paper दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि फेल तो होना ही होना है. तो कोचिंग क्लासेस, तो मेरे को भी सबने डर बिठा दिया कि तू भी फेल होगा, तू तो 45 थ्योरी करके आया, तू कैसे पास हो जाएगा जब हम नहीं हो सकते. यस, सो आई स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस. 4 महीने मैंने पेपर पैसे दिए, पर मंथ 2-3 हजार रुपए जितनी भी फीस लगती थी दी. 4 महीने के बाद रिजल्ट आया, पूरी क्लास फेल, सिर्फ मैं, पूरी क्लास फेल, 99% स्टूडेंट फेल, ओनली आई वाज पास्ड. So this is what, so there I made also one conclusion. That time I was not much aware on that why it happened and how it happened, but slowly when I was getting matured and I was thinking that why it has happened. So theme from here is, or moral from here is, that pick your strengths. Pick your strengths. Don't worry about your weaknesses. I have many weaknesses. Frankly speaking, I have many weaknesses. This is why I always go for one-on-one coaching programs, motivational talks, or so many things. But I don't show to the world that what are my weaknesses. My boss, my colleagues, they don't know about my weaknesses. I know about my weaknesses. Correct? But I show them, or I work on my strengths only. If even I have one strength, so I work on that strength. And now I'm sharing you that strength with you also, which recently last 2-3 days I was reading in the newspaper also. And don't compare me to that level. But that strength is the most important strength anybody could have. This is the discipline. After passion is the discipline. So I am very disciplined by nature. I am not from an army background or any such background, but I never reached late in any event, any program, anytime in the college, anytime in the school, anytime in the office. Maybe 12 years of my professional career. If I have to reach 9 a.m., I have already reached 8:55. Today, Amlan asked me that he will pick me up at 4:30. I was ready 4:20. He picked me at 4:45. That's another story. So I asked him specifically that what time the event is going to start. He said 6 sharp. I said, okay, I'll speak more than my allocated time. So I have to reach 15 minutes before. So I reached here around 5:30, 5:35. So this is another aspect I'm telling you, which will pay a lot to all of you. It does not matter how good, how bad you are in your soft skills or hard skills or whatever area you will go. If you are disciplined enough, you are bound to create great success than your colleagues, peers, juniors, or whosoever. So be disciplined. Try to be disciplined. It's a difficult word again, but few characteristics you have to. I am a Punjabi, so Punjabi में एक word है रहत मर्यादा. It's a typical Punjabi word, which I learned maybe again from one of my motivational speaker maybe 4-5 years before. Rahat Maryada means code of conduct. Code of conduct means you yourself should have few characteristics imbibed in you. That आप ये करोगे और ये नहीं करोगे. नहीं करोगे बड़ा मुश्किल है, करोगे तो कुछ भी कर लेते हैं, करेक्ट? तो नहीं करोगे में एक या दो चीजें डिफाइन करनी अपने लिए जरूरी हैं. Unless you define those parameters for you, you can't create a great success unless you are lucky like Bill Gates or Steve Jobs or whosoever. Those who even not passed their college, but they are the billionaires and we are working for them. Correct? So this is the reality again. So discipline is the one area
I see is the most important. You might have read all last 3 days also, a lot of news on PV Sindhu also, that she was the first student to reach academy 440, 430, whatever the time. So, and coach liked him because of his discipline. And coach started spending a lot of his time on PV Sindhu compared to the Saina Nehwal. This was maybe 6 years or 8 years before also, correct? So discipline makes a lot of sense, lot of difference. When I was working for SGS, I remember, I'm giving you some glimpse. So why it worked for me, why it will work for you. When I was working for SGS, I was very young. My boss reached office around 9:15. He was the India head for SGS that point of time. And fortunately, wherever I have worked, I have always reported to the India head. So I'm a little lucky also. People say my luck line is very strong. That's good. So I was reporting to him. So he always reach office maybe 9 a.m. So I make a point that before he reach office, I have to send him all the emails related to whatever he has asked me, either in the night or before he reaches office. So I started reaching office maybe 7:30, 7:15. I was bachelor. I had no girlfriend. I was not smart enough to have a girlfriend that time also. So I was very free to work, correct? So that paid me from my first job. Same happened with Reliance. So not to be quoted to Reliance people, but Reliance is an organization which I'll not suggest to any one of you to work, okay? I worked there for 3 years. Because there you will not learn anything. I'm telling you, you will not learn anything. You will forget whatever you have learned. So not to be quoted, they are my customers, okay? So I was in Reliance 3 years. So habit of all Reliance employees, I was 2007, retail started in India. Reliance was one of the pioneer, those who started giving a lot of news every day in the economic times that we will do this, we will do this, we will do this. Most of the professionals from all corporates started joining Reliance. I was one of them, correct? So I joined Reliance. What I saw over there, कोई भी ऑफिस नहीं आता, कोई भी टाइम पे नहीं आता है तो कोई काम नहीं करता, सब शेयर मार्केट में वो खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, सुबह बैठ के 9:55 पे मार्केट खुलती है, सब या 8:55 व्हाटएवर टाइम, तो सब अपने शेयर्स 9:55 तो सब अपने शेयर्स खरीदने शुरू कर देते हैं. ये कहाँ फंस गया मैं. बट एनीवेज, देन ऑल्सो आई रियलाइज्ड कि अब क्या करा जाए. अगेन आई हैड अ हैबिट ऑफ डिसिप्लिन. और मैं हैबिट के बारे में जरा सा टच करूंगा आपको कि हाउ आई डेवलप दिस हैबिट. आई वाज नॉट डिसिप्लिन्ड एज अ किड, बट आई डेवलप दिस हैबिट. So even in Reliance, where people was not reaching office, maybe I don't know what time, I started reaching at 9 a.m. Even in Reliance, there were few good bosses, those who started recognizing me, and they gave me the better work, better profile, which I was supposed to do at that experience or that, what do you say, experience particularly, correct? I was only maybe 6-7 years of experience when I joined Reliance. They gave me work usually which they gave to 15 or 20 years of work, correct? Because only for the discipline कि इसको काम दे दो ये करके चला जाएगा. Same habit. I joined Reliance first year. I reached office maybe 8:39. Official time was 10. I was leaving maybe 9:30, 10, whatever time my work is finished. So I will not ask any one of you to work like this, but I will surely ask to work like this till you are bachelor. And don't make girlfriends यार. शादी तो किसी की भी हुई जाती है. बनाओ तो उसको शादी से पहले बोलो कि मुझे काम करने दे, एक बार कहीं पहुंचने दे, उसके बाद देखेंगे. बाद में तो उसने वैसे भी चिक करनी है और वैसे भी करनी है, ठीक है? तो इट डजंट मैटर, ठीक है? नहीं, मैं ही नहीं कह रहा गर्लफ्रेंड्स मत बनाओ, बट अपने कैरियर पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? या बॉयफ्रेंड मत बनाओ, ऐसा नहीं बोल रहा. So again, discipline paid a lot for me, correct? So it's still paying for me. I still feel I am disciplined, but yes, some percentage of that has little declined since I had a daughter. I started giving little priority to my family also now, but still I am the most disciplined among my 50 mobile phones core members. I am the most disciplined, and nobody can become the head of this business because they are not more disciplined than me. They are not doing hard work better than me, but they are much smarter than me. Most of them are smarter than me in the area they are work. I don't, frankly speaking, when I joined mobiles, I didn't know about anything about the product. So I hired somebody basically from the research institute, some marketing guy from the Coke or Pepsi or so FMCG companies. So, but I always challenge them that you cannot take my position. You can only take my position if you are more disciplined than me or if you can do much harder work than me. But none of them till now has done that. Even Amlan has not done that. I asked him,
to join for a cricket match at 5:45. He sent me message at 12:30 in the night. सर मैं पार्टी में हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा. बॉस मैं 2 बजे सोता हूँ तो मैं 5:45 का अपना क्रिकेट मैच जरूर खेलता हूँ सैटरडे संडे को. ठीक है. So this is what you have to create a code of conduct. So code of conduct is really really important in life. Code of conduct means discipline. कि मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा. और ये नहीं करूंगा is really important. करूंगा तो हमें भी पता नहीं चलता कि हम क्या क्या कर जाते हैं. ठीक है. And the last point which I want to touch is you have heard this point again lot of time, is the execution. Whatever you decide, even you decide that I'll go for MS, or I'll want to join Google, or I want to become an entrepreneur, I want to have a startup, whatever you think that you want to do, it requires execution, correct? Which these days people say operations. To me, operations is nothing. Operations is nothing. It's just defining some steps, making a process, how a thing should be done, or how a thing should we do, correct? So execution plays a lot of role once you join any organization or any position anywhere. And in execution, most important step is that you should know all these steps by yourself. Not even a single day your junior should feel that boss को ये आता नहीं है, मैं उसका बेवकूफ बना लूंगा, या बॉस ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा. तो जो आमलान काम करता है, या मेरी टीम में परम काम करता है, आशीष काम करता है, मुझे सबका काम पता है कि काम क्या कर रहे हैं. ये नहीं पता कि वो फाइनली उसको एग्जीक्यूट कैसे करवा रहे हैं, बट ये जरूर पता है कि काम क्या कर रहे हैं. सो एज अ wherever you join, you should work in so detailed manner that you know what steps are required. So execution is really really important, and have a close watch on everything. मैं अपना पहला मैसेज सुबह 6 बजे पूरी टीम को भेज देता हूँ कि आज ये काम है, उसके बाद 2 घंटे आराम करता हूँ. तो स्मार्ट, अगेन यू हैव टू बी लिटिल स्मार्टर ऑल्सो. सब लोगों को लगता है कि मैंने 6 बजे काम शुरू कर दिया, पहला मैसेज 6:01 पर सबके पास चला जाता है. देयर आर 6-7 ग्रुप्स. आई विल शो यू समडे व्हेन आई विल कम फॉर अ डिटेल स्पीच आल्सो, मे बी सम टाइम. तो 6:1-6:2 मेरा पहला मैसेज चला जाता है कि इसके ये काम है. 6:15 6:20 तक मैं सबके काम पूरे दिन के एलोकेट कर देता हूँ. फिर 9 साढ़े 9 तक खुद फ्री हो जाता हूँ. ठीक है. उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचता हूँ 10:30 बजे और सबके काम रिव्यू करने शुरू कर देता हूँ कि ये काम कल का था, ये काम आज का था, तुमने क्या किया 5-5 मिनट की डायरेक्ट रिपोर्ट के साथ डिस्कशन. फिर मैं फ्री हो जाता हूँ अपने कमरे में. फिर मैं बुक पढूं, बात करूं, यूट्यूब पे वीडियो देखूं, कुछ करूं. ठीक है. सो दिस इज हाउ आई डेलीगेट वर्क, करेक्ट. देन 4 और 5 PM जब डे क्लोजर होने लगता है, मैं एक बार फिर रिव्यू कर देता हूँ, क्विक रिव्यू कि क्या हुआ. सबको प्रेशर रहता है कि ये क्या है. अब ऊपर वालों को भी लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, नीचे वालों को भी लगता है मैं बहुत काम कर रहा हूँ, और वो मुझे हर साल कभी ये कंट्री दे देते हैं, कभी ये कंट्री देते हैं. बट ये ट्रुथ नहीं है. ट्रुथ कुछ और है, वो मैं डिटेल सेशन में बता पाऊंगा कि करना कैसे है. बट व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू, बिकॉज यू आर गोइंग टू जॉइन सम कॉर्पोरेट and you have to be smart enough if you really have to grow. So there are people in my team who are 55 years, who are 57 years. Those are reporting into me. I am only 35 years. I pay a lot of respect to them. I have never shouted on them. I have never said anything wrong to them. Even they do wrong, because experience makes a lot of difference. I still learn a lot of things from them. It's just a matter of time that these guys are reporting to me. Sometime I also report to some of them once I'll grow old maybe. So point is, last नहीं बोलूंगा, मेरे को कुछ याद आता रहेगा तो मैं बोलता रहूंगा. कितना टाइम रहेगा पहले ये बता दो सर. कपल ऑफ टाइम, कैन आई हैव कपल ऑफ मोर मिनट्स? नो, ठीक है. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू हैव टू बी रियली रियली स्मार्ट. मैं जिस भी ऑफिस में गया ना, मैंने 4 या 5 कॉर्पोरेट चेंज किए हैं. मैं सबसे पहले सेटिंग करता था HR वालों के साथ. कभी भी HR से मैंने कभी लड़ाई नहीं करी. कितना भी गुस्सा आ जाए मैं कुछ नहीं बोलता उनको, मुझे कुछ भी उल्टा बोल देते हैं. आज भी मेरे यहाँ पर 4-5 HR के लोग हैं. पीयू एक लेडी है, रिजवान है, आदर्श इज HR हेड. सबसे ज्यादा मेरे को यही लगता है कि इन्हें अपना काम नहीं आता और ये अपना काम ठीक नहीं कर रहे. बट आज तक मैंने उनको रियलाइज नहीं होने दिया कि उनको उनका काम नहीं आता. उनको मैं यही फील कराता हूँ कि वो वर्ल्ड के बेस्ट HR हैं, क्योंकि कंपनी में तभी तक चलोगे जब तक HR के साथ दोस्ती अच्छी रहेगी. ठीक है. तो मैंने 4-5 कंपनियों में ये किया कि HR के साथ सेटिंग करके अपने बैठने की जगह MD, CEO, whoever उसके केबिन के सामने करवा ली कि मेरे को बैठना है तो यहाँ बैठना है, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा. उसे बैठने की कंडीशन बता दो कि वहाँ बैठने की कंडीशन क्या है, कि जल्दी आना पड़ेगा, तो डेस्क पे बैठना पड़ेगा, बार बार चाय कॉफी पीने के लिए नहीं जा सकते. तो वो कंडीशन मैंने हमेशा चेक कर ली कि क्या है, और मुझे चाहिए वही सीट. क्यों चाहिए? मैं टाइम पे आ रहा हूँ, काम पूरा कर रहा हूँ, छुट्टी करता नहीं हूँ, तो सामने वाले को पता तो चलना चाहिए.
अब डेस्क पे बैठ के क्या कर रहा हूँ वो उसको ना पता चले जाए, पर डेस्क पे बैठा हुआ हूँ उसको ये पता है, करेक्ट। और जब वो सामने होता है ये भी इंश्योर करता हूँ कि हमेशा सेल्स वालों को कॉल करता रहूं, आज भी करता हूँ। आज भी उसको कोई भी छोटी सी अचीवमेंट होती है उसको दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ कि ये हो गया। जो गलत होता है वो नहीं करता। और मेरी कंपनी में मेरा एमडी मुझे कहता है कि तू वो आमिर खान है जिसकी पिस्तौल में जब गोलियां होती हैं धड़ 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 चला देता है, जब गोलियां खत्म होती हैं कहता है भाई क्या हाल है, भाई ठीक हो आप, सब ठीक हो। सो यू हैव टू बी स्मार्ट, करेक्ट। So whenever you join, whatever you do in your life, you have to be really good with people. You have to be really strategic in mind. कभी भी ना किसी चीज का रट्टा मत लगाओ लाइफ में। रट्टे से या किसी फिक्स्ड अप्रोच से कुछ नहीं होने वाला। जितना भी 8, 10, 15, 20 स्पीकर्स ने बताया ना, कुछ काम नहीं आएगा जब ऑफिस ज्वाइन करोगे। मैं बता रहा हूँ, मुझे तो कुछ काम नहीं आया आज तक। मैं सही बता रहा हूँ, ये कुछ काम नहीं आएगा, मुझे आज तक ये कुछ भी काम नहीं आया। काम क्या आएगा कि आधा घंटा 15 मिनट शांति से बैठ के ये सोचना है कि ये आदमी ये काम कर रहा है, मुझे ये वाला काम कैसे करना है। बट इसमें भी एक वर्क एथिक होना जरूरी है, हमें दूसरे को पीछे नहीं करना। आई नेवर प्लेड अ पॉलिटिक्स इन माई ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी की लाइन अपनी लाइन से छोटी करने की कोशिश नहीं की, ऐसी कोई हरकत ही नहीं की, ऐसी करनी भी नहीं है। हमें अपना काम बेटर करना है, करेक्ट, बट अपना काम बहुत ज्यादा स्मार्टली करना है, बहुत ज्यादा स्मार्टली करना है। अभी ये whosoever was reading my brief, उसने मुझे 10 टेक्नोलॉजीज गिना दी कि मैं पंकज 5G पे काम कर रहा है, IoT पे काम कर रहा है, AI पे काम कर रहा है। फैक्ट बताऊं लाइफ का, फैक्ट, मुझे AI की डेफिनेशन से ऊपर नहीं पता कि AI क्या है। IoT की डेफिनेशन से आगे नहीं पता कि IoT क्या है। And next year, if you will call me here, you will see that I am the head for AI and IoT for Panasonic. अब इसका रीजन भी बताता हूं क्यों। आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं इस वर्ड को कि बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा कि आपको किस एरिया में काम करना है। एक बार कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई भी फंक्शन ज्वाइन कर लो, डज नॉट मैटर, कभी भी चूजी मत होना। मैं कह रहा हूं कोई भी कंपनी भी ज्वाइन कर लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा हिंदी में मैंने, पता नहीं या तो मेरे कॉलेज के टीचर्स ऐसे थे या मैंने कहीं से पढ़ लिया, मुझे भी कुछ चीजें याद नहीं है, बट कुछ चीजें मेरे माइंड में हमेशा रह गई। उनमें से एक चीज बताता हूँ, इसको याद रखना, इट पेज अ लॉट टू मी, इवन आई स्टिल रिमेंबर, कि बड़े तालाब में छोटी मछली होने की बजाय ना छोटे तालाब की बड़ी मछली रहो, राजा रहते हो, ठीक है। तो इवन इफ आई ज्वाइन गूगल, तो मैं गूगल में जाना पसंद नहीं करूंगा, वहां पर वो मेरे जैसे बहुत तुर्रम खां बैठे होंगे, और वहां वैसे भी जो टेक्निकल लोग हैं, हार्ड कोर टेक्निकल लोग हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा है, मेरे जैसे वो कौन पूछेगा। जो स्मार्ट प्ले ज्यादा करता है, हार्ड वर्क कम करता है, करेक्ट। तो एनीवेज पॉइंट ये है कि स्मार्ट डिसीजंस हमेशा लेने चाहिए। 2007 में मैंने ये रियलाइज किया कि इंडिया रिटेल की तरफ मूव हो गया है, तो मैंने रिटेल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। 2010 में मैंने ये रियलाइज किया कि अब एलईडी की मार्केट साइज काफी बड़ी हो रही है, सो मैंने उससे 1-1.5 साल पहले से ये सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं एलईडी में कैसे आ जाऊं। फिर मैंने सोचा कि अब यार ये तो खराब हो गई मार्केट, अब समझ आ गई है मार्केट, अब आ जाते हैं मोबाइल फोन्स में। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी जब मैं मोबाइल्स में आया कि मैं फ्लिपकार्ट या अमेजन ज्वाइन करूं या मोबाइल फोन्स ज्वाइन करूं, बट समहाउ लक प्लेज हियर ऑल्सो, कि मुझे लगा कि नहीं, मोबाइल की एक ऐसी फील्ड है जो टेक्नोलॉजी की फील्ड है और ये हमेशा रहेगी वन वे और अनदर वे, तो मैंने मोबाइल ज्वाइन कर दी। अब मैं मोबाइल से तंग आ चुका हूँ, इनफैक्ट बोर हो चुका हूँ। अब नेक्स्ट मुझे लगता है जो फ्यूचर है वो AI और IoT है। और मैंने ये देखा पिछले 1 साल से कि पैनासोनिक इंडिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है, नॉट इवन अवर हेड, कि जो AI और IoT के ऊपर कुछ कर रहा है। मैंने भी कुछ नहीं किया, पर मैं रोज बोलने लग गया, सर AI में करना है, सर IoT फ्यूचर है, सर AI फ्यूचर है, सर IoT फ्यूचर है, सर AI फ्यूचर है, सर IoT फ्यूचर है। लगातार बोल बोल के अब जो भी AI और IoT की मीटिंग होती है वो मुझे बुलाता है कि पंकज करेगा इस मीटिंग को। और सही बता रहा हूँ, आज भी AI की डेफिनेशन से ज्यादा मुझे आज भी नहीं पता कि क्या करेगा वो। तो पॉइंट ये है, अगेन you have to have some traits, but you have to have really smart when you go to the corporate world. Some of you have worked, I met few candidates who is doing executive program here, so they were trying to sell me that आप आओ और हमें ले जाओ। यार मैं आऊं या नहीं आऊं, मैं लूं या नहीं लूं, जहां भी जाओ वहां पर इतने स्मार्ट रहो कि अपने आप लोग आए और लेते रहें तुम्हें, करेक्ट। दैट मैटर, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और
कंपैरिजन नहीं करना लाइफ में। मेरी वाइफ आज भी मुझे इतना पुश करती है, मैं कल परसों का एग्जांपल देता हूँ आपको। उसका फ्रेंड आया फ्रॉम देयर न्यूयॉर्क, करेक्ट, शी इज इन अ सॉफ्टवेयर, करेक्ट। तो रोज हमारी घर पे एक ही बात होती है कि मेरी सारी फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स लेके यहाँ चली गई, वहाँ चली गई, वहाँ चलेगी, तुम्हारी वजह से मैं इंडिया में हूँ। ठीक है यार, अब मैं क्या करूँ, अब तुम मुझे बदल दो, मैं तो सॉफ्टवेयर सीख नहीं सकता, ठीक है। अब परसों फिर एक बंदा आया घर पे न्यूयॉर्क से, वो अपना ज्ञान वो बताने लग गया कि भाई मैं अब 2 महीने की यूरोप टूर पे जा रहा हूँ, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, ये वो सब करने लग गया। मैंने कहा यार हद होगी यार, ठीक है। मेरे को बड़ा डिमोरलाइज कर दिया उसने यार। मैं कहा तू साले मेरे घर पे आया है, यहाँ सो रहा है, यहाँ खाना खा रहा है, तो साले मेरी बजा रहा है। अब मेरी वाइफ ही मेरे को देखी जा रही घूर घूर के कि देख ये क्या कर रहे हैं, देख ये क्या कर रहे हैं, तू गोवा तक नहीं लेके जाता, ये यूरोप घूम रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कल बेटा तूने सब कुछ बोल दिया, मेरी बारी है, चल। मैंने उससे पूछा, लिटरली ऐसे पूछा, मैं कहा भाई हो गया सब कुछ? कह रहा हाँ। सरदार है वो, उसका नाम है कपिल, नेम इज कपिल बट सरदार है। ही इज अ गुड फ्रेंड टू मी आल्सो, ही वर्क्स विद KPMG इन US। तो मैंने कहा भाई तूने तो सब कुछ गिना दिया कि तू बाद में वहाँ के जगह क्या है, मियामी गया, LA गया, LV गया, XYZ गया, यहाँ गया, वहाँ गया, यहाँ तो स्ट्रिप बार में गया, प्लान ढिमकाना, तो सब गिना दिया यार। मैं ठीक है, मैंने कहा अब चल देखते हैं। मैं कहा मेरा भी शुरू कर दूं, बहुत देर हो गई यार, और हूँ तो मैं भी पंजाबी, तू 10 सुनाएगा 20 तो मैं भी सुना के भेजूंगा तेरे को, ठीक है। कभी किसी न्यूज़पेपर में तेरा नाम आया? कह रहा नहीं। मैं किसी मैगजीन में नाम आया? नहीं। मैं कहा किसी कॉलेज के किसी बच्चे को किसी को भी लेक्चर दिया? कह रहा नहीं। मैं क्या बताएगा अपने बच्चों को कि बस घूमता ही रह गया, ठीक है। तो पॉइंट ये नहीं है कि हाँ, अब मैं कंपैरिजन वाले पॉइंट पे था। इसके बाद मैं सिर्फ एक पॉइंट और बोलूंगा, फिर बुला लेना, मैं बहुत वेला रहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं डेलीगेट करने के बाद फ्री हो जाता हूँ, ठीक है। तो कंपैरिजन कभी किसी से मत करना। ये मेरी वाइफ बहुत कंपैरिजन करती है, इतना कंपैरिजन करती है कि कभी कभी मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि क्या कर रहा हूँ यार मैं लाइफ में, ठीक है। और तुमने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक पेज पढ़ दिया यार, कभी उसको पढ़ के बताओ यार मेरे बारे में, ठीक है। मैं इसलिए उसको आज लाना चाह रहा था। आमलान, माय एक्चुअल प्लान वाज टू ब्रिंग हर हियर कि यार मैं अच्छा बोलता हूँ, मुझे भी सुन लो, मुझे थोड़ी सी इज्जत दे दो यार घर पे, ठीक है। अच्छा, तो कंपैरिजन नहीं करना लाइफ में। कंपैरिजन अगर मैं करने लग जाऊं तो मुझसे तो महेंद्र सिंह धोनी एज में शायद बराबर है, बट विराट कोहली तो मुझसे बहुत छोटा है, PV सिंधु तो मेरी 15 साल छोटी है, तो उसके सामने तो हमने कुछ भी नहीं है, करेक्ट। नन ऑफ अस, इवन 1% नहीं है उनके सामने। 1 तो बहुत बड़ा बोल दिया, मतलब कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो कंपैरिजन नहीं करना। जहां हो, जिस स्टेज पे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है उसको बेस्ट करो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मैंने इस कंपैरिजन के लिए भी अच्छा, मैंने कोई भी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बता रहा हूं, मैंने कोई एग्जांपल घर से सोच के नहीं आया था, कोई चीज सोच के नहीं आ रहा था, दिमाग में आता जा रहा है, बोलता जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं बड़ा एक क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं आपको। आई प्ले रेगुलर क्रिकेट। अगर सम ऑफ यू प्ले, यू कैन जॉइन मी ऑन वीकेंड, सैटरडे, संडे, एनी टाइम। और हमारे टीम के प्लेयर वैसे भी कम ही रहते हैं, कई बार आमलान एज यूजुअल आता नहीं, रात को पार्टी करता है, ठीक है। ये गारंटी है जो बेस्ट क्रिकेटर होगा मैं उसको जरूर हायर करूंगा, क्योंकि जो बेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, काम तो मैं उसको सिखा ही दूंगा, क्योंकि मैंने खुद काम नहीं किया तो उससे क्या उम्मीद करूंगा, ठीक है। अब मैंने 8-9 महीने पहले गुड़गांव में घर शिफ्ट किया, डॉटर के प्ले स्कूल की वजह से घर शिफ्ट किया। तो मैं सोसाइटी में शिफ्ट हुआ, फॉर्चुनेटली वहाँ बड़ा सा ग्राउंड है, उनकी क्रिकेट की टीम है, और मैंने पिछले 2-3-4-5 साल में क्रिकेट नहीं खेला था, बट जब वहां सब खेलने लग गए तो मैं भी जाने लग गया। हुआ क्या, पर 9 महीने पहले मुझे क्लियर था। अब मैं इसको स्टोरी को कनेक्ट करूंगा आपको। जब मैंने ज्वाइन किया, वहां 11 प्लेयर ही खेलते हैं क्रिकेट में, सारे मेरे को टीम में ही नहीं रखते थे। टीम में रखते थे ना बॉलिंग देते थे, ना बैटिंग देते थे, फील्डिंग कराते रहते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सबको नोट करता गया कि ये आदमी ना मेरे को बैटिंग दे रहा है, ना बॉलिंग दे रहा है, ना फील्डिंग दे रहा है। और बट आई वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था, मुझे अपने पर सेल्फ बिलीव था कि मैं यार इनसे तो ठीक खेल लूंगा, जब भी अच्छा खेलना शुरू कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 5-6 लोगों का ग्रुप बनाया जो मेरे जैसे नालायक थे, और हमेशा नालायकों का ग्रुप बनाना चाहिए ताकि उसमें तुम होशियार हो जाओ और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तुम्हारा, ठीक है। तो मैंने 4-5 अपने जैसे लोगों का ग्रुप बनाया, जिन्हें ना बैटिंग मिलती थी ना बॉलिंग मिलती थी, वो पीछे खड़े रहते थे। मैंने कहा यार अब हम भाई 5-6 लोग मिलकर ना नेट प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ नेट्स भी लगे हुए हैं सोसाइटी में। मैं कहा सुबह 6 बजे उठेंगे और 1 घंटा नेट प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने अपना गोल उनको नहीं बताया, पर मेरा गोल ये था कि इन सालों को 9 महीने के बाद सेलेक्ट भी मैं ही करूंगा, टीम में भी मैं ही रखूंगा और कैप्टन भी मैं बनूंगा।
मैंने अपने ऑफिस के कुछ लोगों को बता दिया था कि अब इनका कैप्टन मैं बनूंगा। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, यार छोड़ दिया क्रिकेट, अभी भी पेट बढ़ा है बट मैं क्रिकेट फिर भी ठीक खेल लेता हूँ। तो मैंने 2-3-4 महीने नेट प्रैक्टिस करी, और वही सुबह पहुंच जाना 5:50 पे, 7 बजे निकलना वहां से, पूरी बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी, बैटिंग की प्रैक्टिस करनी। 2-3 महीने के बाद जब मुझे लगा कि अब मैं परफेक्ट खेलने लगा हूँ, तो एक मैच में मैंने सेटिंग शूटिंग करके बॉलिंग और बैटिंग मान ली, और वही अपॉर्चुनिटी थी जब मैं अच्छा खेला। और धीरे धीरे करके जिन लोगों ने मुझे बाहर किया था, मैंने उनको टीम से बाहर करना चल दिया कि तेरी बैटिंग ठीक नहीं है, तेरी बॉलिंग ठीक नहीं है। आज मैं सेलेक्टर भी हूँ और कैप्टन भी हूँ। आप आओगे तो दिस इज फैक्ट कि मैं अपनी सोसाइटी की टीम का सेलेक्टर भी हूँ और कैप्टन भी हूँ। आमलान को मैंने सिर्फ यही फैक्ट प्रूव करने के लिए बुलाया था कि मैं देख अब कैप्टन भी और सेलेक्टर भी, और आया नहीं है देखने के लिए, तुम्हें बुलाऊंगा किसी को, ठीक है। सो अगेन व्हाट पेड मी, इवन इट अ स्मॉल लेवल की सोसाइटी की क्रिकेट गेम के बीच में, डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और स्मार्ट अप्रोच। अगर मैं अपने नेट प्रैक्टिस में वो 5 धुरंधर लोगों को बुला लेता जो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, सारे मेरे को नेट्स में भी नहीं खेलने देते। फिर तो मैंने उन्हीं को बुलाया कि जिनके साथ मेरा कॉन्फिडेंस रोज बढ़ता है कि इससे अच्छी बॉलिंग मैं कर रहा हूं, इससे अच्छी बैटिंग मैं कर रहा हूं। तो कोई मतलब पॉइंट ये है कि हर चीज को स्मार्ट तरीके से करो, हर चीज को स्मार्ट तरीके से करो, और हर चीज की एक हैबिट डेवलप करो। हैबिट 90 डेज में डेवलप होती है। पहले 20 दिन में आपकी हल्की हैबिट डेवलप होती है, जिसे लाइट हैबिट बोलते हैं। उसके बाद 20 से 40 दिन का एक पीरियड होता है जिसमें तुम्हारी हैबिट लाइट हैबिट से हैबिट में आती है, और 90 डेज के बाद वो तुम्हारी रूटीन बन जाती है। तो ये एक प्रोसेस है, मैं भी ऐसा मुझे याद नहीं है बट आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस कि, और इसको बोलते हैं इन मोटिवेशनल टॉक और इन सब लैंग्वेजेस में बोलते हैं एक्सरे कैलेंडर। आप एक 90 दिन का कैलेंडर लगा लो अपने घर पर, जिसमें 1 to 90 लिखा हो एग्जाम्पल, या आप डेट वाइज लगा लो व्हाटएवर वे, और उस पर रोज क्रॉस करते जाओ whichever thing you start in your life। अगर पहले 20 दिन में तुमने एक भी मिस्टेक नहीं की, सब बार एक्स लग गया, मतलब एक्सरे कैलेंडर बन रहा है आपका, तो इट मींस तुम्हारी हैबिट ठीक डेवलप हो रही है। पर अगर एक भी बार आपने मिस कर दिया तो फिर 0 से शुरू करो। जब 20 तक हो गया तो 20 से 40 के बीच में तुम एक बार मिस कर सकते हो, फिर 40 से 90 के बीच में 2 बार मिस कर सकते हो, पर इससे ज्यादा मिस करोगे तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और वंस यू गो थ्रू दिस रिजाइम 90 डेज फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ, तो तुम्हारी वो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा वो, मतलब जिम की भी बात करें, अगर जिम ही जाना है किसी को सुबह 6 बजे, या किसी को नेट प्रैक्टिस पे जाना है, कुछ भी करना है, तो ये एक एक्सरे कैलेंडर बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो तुम्हें अपने अंदर अडॉप्ट करने हैं, अपने अंदर लाने हैं, सो दैट यू बिकम अ ग्रेट प्रोफेशनल, यू बिकम अ ग्रेट फादर, यू बिकम अ ग्रेट हस्बैंड। कभी नहीं बन पाओगे, बनना भी मत, ठीक है। तो बट यू कैन बिकम अ ग्रेट फादर, ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट कुलीग with few habits, and those things you have to develop in yourself. So I'll just now conclude my session by again repeating few words which I said कि पैशन होना जरूरी है, और पैशन भी ना कोई लेके पैदा नहीं होता, पैशन डेवलप हो जाता है। देयर आर फ्यू टेक्निक्स कि कैसे डेवलप हो जाता है। पैशन के साथ डिसिप्लिन होना जरूरी है, एग्जीक्यूशन होना जरूरी है, स्मार्ट वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम लोग चिढ़ते तो होगे उस बंदे से जो टीचर के सबसे क्लोज रहता होगा, सबसे ज्यादा नंबर दे लेता होगा, और मैं उसको सबसे ज्यादा स्मार्ट मानता हूँ कि कुछ तो उसमें स्किल है ही ना। पॉइंट ये है कि डोंट लुक एट, किसी से कंपैरिजन मत करो लाइफ में कि ये मुझसे इस चीज में अच्छा है, ये मुझसे पतला है, ये मुझसे मोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम क्या हो वो मैटर करता है। कोई तुम्हें कुछ देगा नहीं और कोई तुमसे कुछ ले नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट आई फील कि लाइफ इज ऑल अबाउट। जस्ट प्लान फॉर योर सेल्फ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। हो जाए तो ठीक, ना हो तो भी टेंशन मत लो, बिकॉज ये तो साइन वेव है, जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आएगा, तो जो आज नीचे है वो कल ऊपर भी जाएगा। सो जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। दिस इज व्हाट इज आई फील। आई हैव नो ग्रेट एक्सपीरियंस, एवरीबडी मोर एक्सपीरियंस पीपल आर सिटिंग हियर देन मी, बट इन सब चीजों के ऊपर प्ले करते जाओ और स्मार्ट रहो हमेशा लाइफ, मतलब जितना स्मार्ट रह सकते हो डिसीजन के बीच में, विदाउट हर्टिंग एनीबडीज इमोशंस और एनीथिंग। अपने आप को तुम कैसे बेटर कर सकते हो, दिस इज लाइफ। एंड आई थिंक ऑल द बेस्ट, यू ऑल विल डू ग्रेट इन लाइफ। दिस इज फ्रॉम मी, एंड फ्रॉम एज ऑलवेज आई टेकन मोर देन टाइम what was allocated by me to myself, correct? Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for those wonderfully kind words and keen insight. It truly was a pleasure hearing you speak.
The floor is now open for questions. We have limited time, so we'll only take a few questions, but if anybody has any question. Well, sir has answered everything we could possibly have asked, so that way he has anticipated us. We have one question, please. Good evening, sir. Good evening, Yeah, one and all. yeah, So my question to you is that the theme is about innovation. yeah. So I wanted to know that what role does innovation play in the phone industry? For example, the retail outlets like few players are setting No, I understood your question. Now let me answer. So, you can sit. Thanks is a nice question. Innovation is one. Maybe I have many. There are many words in this. मतलब आजकल की जनरेशन में चल रहे हैं कि इनोवेशन इज वन ऑफ दम. स्टीव जॉब जब से मर गया या पैदा हुआ सबको इनोवेशन ही याद आ रही है. करेक्ट. So if you ask me, I am not the right technical person to give you the perfect answer. Though I have many things which innovative things we are going in smartphones. मैं उनमें से किसी भी चीज को आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आप करने ही नहीं वाले अगले 2-3 साल में. पर मैं आपको इनोवेशन जरूर बता देता हूँ कि इनोवेशन क्या होती है. ठीक है. इनोवेशन कुछ नहीं होती. इवन स्टीव जॉब्स की हिस्ट्री निकाल के देख लेना. जो आइडियाज बाकी सबके फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ टाइम लैग, या उस टाइम वो मार्केट ही मैच्योर नहीं हुई या उस वो आइडिया ही मैच्योर नहीं हुआ, उस आइडिया को आप कितने बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो. कोई भी ऐसी नई चीज, मतलब हमारे में से कोई भी आइंस्टाइन तो है नहीं. ये तो ट्रूथ है, लाइफ का और रियलिटी है. तो इनोवेशन कॉपी पेस्ट है. जो अच्छा कॉपी और पेस्ट करता है वो बेस्ट इनोवेटर बनेगा. मैं तुम्हें आज बता रहा हूं. और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम में से कोई आइंस्टाइन है, फिर वो डिफरेंट चीज है यार. फिर वो then I am not a right person to ask this question or give you this answer. But point is, yes, innovation plays a lot of role. और इनोवेशन एक्चुअली जो वर्ड है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, फिर वही बोल रहा हूँ, आपने इनोवेशन के बारे में बुक्स पढ़ दी होंगी, लेक्चर सुन दिए होंगे. मैं बताऊं, इनोवेशन जब काम करोगे ना ऑफिस में, बॉस ने 2 थपेड़े लगाने हैं कि भाई ये क्या इनोवेशन कर रहा है, मेरे को सेल चाहिए, टॉप लाइन चाहिए और बॉटम लाइन चाहिए, जहां से मर्जी लेके आ. ठीक है. तो तब अपने आप सारी इनोवेशन भूल जाओगे. वहां क्या याद रहेगा? अच्छा, अब इनोवेशन करनी क्या है ये भी बता देता हूं. ऐसा नहीं कि इनोवेशन इज अ रॉन्ग वर्ड और वो नहीं होती. कोई भी फीचर जब हमें फोन में लाना होता है ना, ऐसा आज की डेट में कोई भी फीचर नहीं है जो कमोडिटी नहीं बन गया, या जो मैं ले आया तो कोई और नहीं ला सकता. आज एप्पल भी कोई ऐसी चीज लाएगा ना, उसके 2 महीने के अंदर अंदर बाकी ले आएंगे. तो इनोवेशन क्या होती है कि कोई भी ऐसे यूनिक चीज को, यूएसपी को आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर पहले लाना है, कंपटीशन से पहले लाना है. अच्छा, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि आप कंपटीशन से पहले उस फीचर को ले तो आए, उस फीचर को मार्केट करना जरूरी है. सो यूएस कंपनीज आर द बेस्ट मार्केटर्स कि जो इतनी सी चीज को इतना बड़ा करके बता देती हैं. और जापानीज कंपनीज, आई वर्क फॉर अ जापानीज कंपनी, दे आर द वर्स्ट मार्केटर इन माय ओपिनियन. उनके पास वर्ल्ड की सब टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट उनको अपनी चीज को, अपनी स्ट्रेंथ को कम्युनिकेट करना नहीं आता. मैं वही बार बार उस चीज को रियलाइज कर बोलता हूं कि अगर आपकी एक स्ट्रेंथ है और 9 वीकनेसेस हैं, इट डज नॉट मैटर इन लाइफ. एक स्ट्रेंथ पे ही प्ले कर दो पूरी लाइफ, और वो स्ट्रेंथ इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए कि आसपास वालों की वो स्ट्रेंथ ना हो. आई थिंक देयर इज अ फेमस कोट बाय ब्रूस ली कि आई डोंट फियर अ पर्सन हु नो 10,000 किक्स, बट आई फियर अ पर्सन हु हैव प्रैक्टिस 1 किक 10,000 टाइम्स. करेक्ट. वो एक किक जिसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, वो किसी को भी हरा देगा. सो इनोवेशन इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग थिंग्स फास्ट, देन मार्केट दोज थिंग्स. Yes, there are innovative ideas in this world. I should not discourage you guys कि इनोवेशन होती नहीं है या इनोवेशन नहीं करी जाती. इनोवेशन की जाती है, बट वो इनोवेशन के पीछे बहुत साइंटिफिक अप्रोच होती है कि लोगों से पूछो आपको क्या चाहिए, कैसा आपको फील होता है, कैसा लाना है, फिर उसको डेवलप करना, कंपटीशन से पहले लेके आना, फिर उसको मार्केट करना. दिस इज अ होल न्यू चैप्टर अबाउट इनोवेशन. बट मेरी लाइफ में इनोवेशन यही है, प्योर पेस्ट किया जाए और फिर उसको जबरदस्त तरीके से मार्केट किया जाए. आई एम अ गुड मार्केटर. मैं कोई छोटी सी चीज भी अगर अपने फोन में लाता हूँ, सैमसंग के पास वो पहले होती है, एप्पल के पास वो पहले होती है. आई एम वेरी ट्रू टू योर सेल्फ. बट मैं उनसे अच्छी मार्केटिंग करना जानता हूँ, उनसे अच्छा कस्टमर को बताना जानता हूँ कि मेरे पास है ये, उनके पास नहीं है. हमने एक 2 साल पहले फीचर लाया था, जेस्चर प्ले. बड़ा सिंपल सा फीचर था, बड़ा सिली सा फीचर था इनफैक्ट, कि फोन की स्क्रीन के ऊपर आप यू लिख दो तो एग्जाम्पल कैमरा खुल जाएगा, डब्ल्यू लिख दो तो व्हाट्सएप खुल जाएगा. और ये पता चलता कैसे था? आप पहले फोन का पावर ऑन बटन दबाओ, फिर फोन की स्क्रीन आएगी, फिर आप यू लिखोगे. अबे यार, जब पावर ऑन ही कर दिया, स्क्रीन ही आ गई, तो फिर सीधा ऐप को ही दबा दो ना यार. क्यों दिमाग लगा रहे हो इतना ज्यादा? अच्छा, मैं उस टाइम की बात बताता हूँ.
तब ओप्पो के पास और सैमसंग के पास यही फीचर था, वो पावर ऑफ में चलता था। आपका फोन ऑफ पड़ा है, स्क्रीन ब्लैंक है, आप यू लिख दो, वो फीचर चल जाता था। उन दोनों ने वो मार्केट नहीं किया फीचर को, हमने उसकी टीवीसी बना दी, प्रिंट एड बना दी, और लोग ये फील करने लगे कि जेस्चर प्ले तो पैनासोनिक के पास फीचर है। ऑफ कोर्स विद इन 3 मंथ्स हमने उसको डेवलप कर दिया, जो सैमसंग है उसके पास था वही चीज उससे बेटर हम ले आए। तो लोगों को क्या फील करवाया हमने पैनासोनिक के बारे में, ऐसे हमने कई फीचर बनाए। हमने एक बनाया ब्लिंक प्ले, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू मोबाइल था, मैं थोड़ा मोबाइल पे भी आ जाता हूँ, ऐसा मत फील करना कि मुझे काम ही नहीं आता। तो एक फीचर हमने बनाया ब्लिंक प्ले, कि आप आई को ब्लिंक करो और आपकी कैमरा फोटो ले देगा। अगेन मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम इस टाइप की कई गिमिक्स थी सबके पास, बट किसी ने भी उसकी टीवीसी नहीं बनाई, किसी ने उसका प्रिंट एड नहीं किया, किसी ने शॉप फ्रंट पे उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, हमने पहले कर दिया। तो आज मे बी you guys, I'm sure you are not using Panasonic, but you might be using Motorola, Xiaomi और those phones, कि हम अभी यूथ में अपने ऐप को एज अ ब्रांड अभी टारगेट नहीं कर पाए हैं, विच वी विल टारगेट इन नेक्स्ट 1.5 ईयर। बट अगर आप शॉप फ्रंट पे जाओ या रिटेलर से पूछो या डिस्ट्रीब्यूटर से पूछो, तो वो ये कहेगा कि पैनासोनिक बहुत इनोवेटिव कंपनी है, या मीडिया के लोगों से पूछो तो बहुत इनोवेटिव है, कि हम बहुत काम करते हैं, बट सही बताऊं हम सबसे पीछे हैं, बट हम मार्केटिंग सबसे बेटर करते हैं। इसलिए नहीं कि हम जापानी हैं, इसलिए कि उनके पास पंकज राणा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इनोवेशन। Thank you, sir, for that wonderful answer. Now, moving on, an event of this scale cannot be successfully completed without the support and hard work of a stellar team. Working behind the scenes, I would now like to take this opportunity to thank the Executive Council of International Management Institute for their unceasing hard work. Taking this opportunity to acknowledge and appreciate their valuable contribution to the smooth running of this event. We would now like to invite the members of the Executive Council to come up to the stage and receive their badges. And I would like to request our chief guest to do the honors, please. First, Abhilash Patil, President, Council of Student Affairs. एक चीज मोदी जी से सीखो, फोटो हमेशा अच्छी खिंचानी है। आओ सर। अब फोटोग्राफर बुरा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा है सर। ओके गुड, थैंक यू। Gautam Krishna Kumar, General Secretary, Clubs. Thank you. Hi Gautam. Shagun Mishra, General Secretary, Events. Dishari Banerjee, Secretary, Corporate Relations Committee. Ripul Agarwal, Secretary, Branding and Media Relations Committee. Mitul Takyar, Secretary, Alumni Relations Committee. Good. Ankush Mittal, Secretary, International Relations and Executive Education Committee. Chavikat, Secretary, Marketing Club. Vaibhav Singh Bisen, Secretary, Operations Club. Sukrit Malhotra, Secretary, HR Club. Somrat Sarkar, Secretary, Consulting and Strategy Club. Akash Gupta, Secretary, Finance Club. Prateek Gupta, Secretary, Economics Club.
Naina Maheshwari, Secretary ECell. Neelima Jain, Secretary IMAC. Yuvraj Singh, Secretary Culture and Event Management Cell. Vishnu Prasad, Secretary Jagriti. Tanvi Mittal, Secretary Sports Club. अबे बैजेस देने के बाद ना मुझे 4 चीजें याद आई यार, मैं बोलता हूँ यार। तो इट अगेन प्रूव्ड कि मैं जो सोचता हूँ वो ठीक होता है। सॉरी अगर मैं बाकियों का नाम ना लूँ, 4 का लूंगा। ये स्पोर्ट्स वाले सारे लंबे ही क्यों होते हैं, और ये मार्केटिंग वाले हमेशा दिखने में सबसे ज्यादा स्मार्ट क्यों होते हैं, और एचआर वाले हमेशा कंफ्यूज ही क्यों रहते हैं। तो मतलब जो मैं सोचता हूँ यहाँ भी प्रूव हो रहा है, देखो, और यही होगा जब तुम जॉब में जाओगे। सो गुड, सो इट्स ऑनर, एंड युवराज सारे स्मार्ट क्यों होते हैं यार, ठीक है। सो इट्स एन ऑनर टू गिव द बैजेस टू ऑल ऑफ यू, इट्स माय ऑनर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. And thank you, the Executive Council of IMAC. Conventus was made possible because of the hard work of a number of people. To acknowledge their efforts, may I now invite our Dean, Academics and Alumni Relations, Professor Arvind Chaturvedi, to give the vote of thanks. Almost 24 hours, 8 hours per day on 19th, 20th, and 21st. 8 different summits, and what a finale. It's a comedy night. I must congratulate the Council of Student Affairs and the entire team led by Vilash Patil, Gautam Krishna Kumar, Sagun Mishra, and all other members of the Executive Council for successfully implementing every dot that they had planned and executing this Conventus 16 successfully. I must congratulate, give them a big hand, please. The kind of background work that had gone into this, making this event a successful event. Maybe more than 2 months they have been planning, and Abhilash and the entire team has been in constant touch with me almost every day, and not only every day but several times in a day. For even small details, he will phone up and say, "Sir, 2 minutes ke liye aa jaun." And for these 2 minutes, he used to be 20 minutes, and the kind of hard work that has gone into it, I think it is one of the most successful conventions we have ever had for the last 5 years. We had 8 summits, as you all know, and we had roughly 40 speakers drawn from industry and corporate, and all of them had deliberated upon subjects which are very important for the corporate world. Though the theme was transforming the corporate India, but the nitty-gritty of the corporate world, which the students are exposed to, I'm sure this will be a great learning for them, and they will also imbibe some great features that they've learned from these corporate leaders in different functional areas of management, be it marketing or finance or economics or entrepreneurship. I attended some of the sessions, and I sat through the entire last session on predictive analysis. And I really think the quality of the speakers that were invited this year was great. And I'm sure
these kind of the lessons which you learned from these great corporate leaders will go a long way in shaping the successful career of yours. And to top it all, we had Mr. Pankaj Rana to deliver the valedictory address, and the kind of things that he shared in a very jovial manner. He gave you the secrets of his life, but not only he shared about how he reacted to his wife's friend, but he also gave you few lessons which I think you will remember for your life: the hard work, the discipline, and the code of conduct. These kind of things, many corporate leaders don't include in their speeches, and I think for this generation, these things are equally important when you are looking for a corporate career. When you are looking for a career which is successful in the least possible time, these attributes are very important, and I'm thankful to Mr. Pankaj Rana for bringing this aspect of his life and sharing some of the things which will be a great learning to you. In the hierarchy, I must thank the Director General, Dr. Bakur Dholakia, because behind every successful thing, the dean or the head of the institute, he had the approval for every month, every rupee that we spent. And it is not only the money that is important, but the kind of guidance that was given by Dr. Dholakia. I think we should all be grateful to him for this successful event. We must say thank Dr. Dholakia. Our DG could not make it for the valedictory address because of his ill health, but I'm sure the kind of lessons that he gave in the inaugural address will also be useful for you in terms of learning. I must thank the entire staff of IMI, starting with the facility manager, Mr. Sunil Singh, and the entire staff which worked day and night. And the sessions of the students in terms of preparations were on till 12 o'clock in the night, or maybe even after that. And there were some people who were attending to them. And these kind of preparations require the entire support of the staff. And I'm sure you will join me in thanking the staff for the successful implementation of their plans and successful Conventus 16. I must thank all the mentors of the 8 clubs. We have faculty members who are mentors of these clubs. The marketing club was mentored by Professor Neena Sondhi, finance by Professor Aman Srivastav, economics by Arnav Dev, entrepreneurship by Supriya Kalla. These 8 mentors have also worked along with the student team, and in the success of the Conventus 16, their share should also be acknowledged. I must also express my gratitude to other faculty members, Dean Professor Pinaki Dasgupta, and our branding team head, Professor D.K. Batra, for every paper that we prepared for the Conventus, every press release that was prepared, every video that was prepared. Professor Batra had his share of hard work, and he approved. He went to each and every line written in the papers, and I'm sure you will join me in thanking for the successful event of Conventus 16. I must also thank the media through, of course, Professor D.K. Batra, because his branding and media team worked overnight, and they were also in constant touch with the press and television media, and whatever coverage we'll get in days to come. And I'm sure the hard work that has gone into it will also give you a good mileage. And therefore, I thank the media for the successful Conventus 16. And last but not the least, the participation of the students themselves. Though we had limitation of the capacity of this hall, normally this auditorium can accommodate roughly around 150 students, but the kind of seating arrangement that we had a restriction
of 19 round tables, and these 19 round tables could only accommodate 6, that is 114, and therefore we had to restrict the participation of the students according to the sessions, and as given to you that minimum 2 sessions you have to attend, and all the students who had participated, I must thank you for the participation, because you not only attended the sessions, but the kind of interesting questions that you put up in the different summits. These questions will not only answer your queries, but it will also be shared by those people who are attending the session, though they may not have asked the question, but all the kind of relevant questions that you ask will also be important learning. In the end, I thank those people who have not named. So anybody who has contributed to this event successfully, I express from bottom of my heart my greatest thanks. Thank you very much. For the successful event. I must thank the sponsors. The sponsors RP Sanjeev Goenka Group and the Panasonic smartphones. Panasonic only does not make smartphones, they also make smart managers. No, in the days when we talk about smart cities and other things, smart manager is also one of the requirement, and Mr. Pankaj Rana has proved that he lives up to the name Panasonic Smart. We must thank Panasonic, because Panasonic is not only partly sponsored this particular event, Panasonic also has sponsored our alumni meets earlier, and therefore a greater thank to the Panasonic. We also thank the innumerable other sponsors, including NTPC, American Express, Punjab National Bank, Allahabad Bank, and Trinity, India Gate, Paperboat, and so on. And without their contribution, this Conventus 16 would not have succeeded. Thank you very much for having participated and making this a successful event. Thank you very much. Thank you, sir. We would now like to present our chief guest with a memento of our gratitude. I would like to request our Dean, Dr. Chaturvedi, to do the honors, please. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. My honor. Thank you, sir. Further, I would like to request Shagun Mishra, General Secretary Events, to present our Dean, Dr. Chaturvedi, with a memento of our gratitude. Thank you so much. Thank you, Shagun. Thank you, sir. Further, we have a cake cutting ceremony. If we could have the cake and request our chief guest to cut it for us to draw it closer to the ceremony. Thank you, sir. We plan to come for the campus this time. Campus placement. Avilash, join. Avilash, Gautam, and Shagun, please join. Dr. Yuvraj, Batra. you can also come. All the executive council members can come. Why not? Yeah, please. Dashini, join. Vibhav, please. नहीं आप आइए आइए आप आओ पक्का हो यार अरे मैं तो काटते हम लोगों का You also join, Akash. नहीं सर आप नहीं, आप- सर अरे सर You are the chief guest. अरे सर आपके साथ ही कर ले रहे हैं
Amlan, come. With you, Dr. Batra. आओ। अरे इट्स ओके ना सर आप हाँ जी सर एक साथ ही इज बेटर थैंक यू सर दिल डू किड्स विल डू सर को देख के Thank you. I'll take. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Batra. Thank you, sir. It was tremendous. Sir, thank you. My pleasure, sir. Thanks for calling. Thank you, Dr. Batra. I'll give you. Yeah, please. So we'll plan to come for campus placement this time. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And drawing the ceremony to the close, I would now like to request our chief guest to sign this mug with a small message for our students. साइन के पीछे भी स्टोरी बताऊंगा आपको पहले साइन कर देता हूँ फिर स्टोरी बताऊंगा ठीक है बताऊँ आप स्टोरी एक मिनट के लिए लेता हूँ साइन हुआ नहीं थोड़ा हेलो हेलो अच्छा मैं एक टॉपिक टच नहीं किया हाँ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है किसी स्पीच के लिए आना पड़ेगा दिस इज रियली गुड ऑडियंस करेक्ट सो हाँ वन थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट उससे पहले मैं फिर साइन की स्टोरी बताऊंगा या दो स्टोरी होंगी यार ठीक है एक मॉर्निंग में ना मैं उसको भी प्रॉपर कर नहीं पा रहा हूँ दिस इज नॉट माई लाइफ टाइम हैबिट बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज ऑन दिस एरिया कि सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनानी जरूरी है कि आज जब व्हेन विल जॉइन कॉर्पोरेट वर्ल्ड अभी आप कॉलेज स्कूल में हो इट डजंट मैटर कि आप बना रहे हो नहीं बना रहे तो टू डू लिस्ट बनाओ और टू डू लिस्ट बनाने के बाद मतलब टू डू लिस्ट में 8 10 15 काम हो सकते हैं आपके घर के भी हो सकते हैं ऑफिस के भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं एक टू डू लिस्ट बनाओ सुबह और टू डू लिस्ट बनाने के बाद अपने गोल्स को रोज सुबह पेपर के ऊपर लिखो कि मेरे को 1 साल के बाद एग्जाम्पल जैगुआर लेनी है या XYZ लेना है या वो लेना है कुछ भी करना है तो जो भी 2-3 गोल्स हैं उनको एक पेपर के ऊपर लिखो और उसको अपने पॉकेट में रख लो दीज थिंग्स रियली वर्क्स आपने ये सुनी होंगी कई मोटिवेशनल स्पीचेस में या कई लोगों से बट दीज थिंग्स रियली रियली वर्क्स और ये छोटी छोटी चीजें ही काम करती हैं लाइफ में स्टीव जॉब्स नहीं आएगा माइक्रोसॉफ्ट का हेड सॉरी गूगल का हेड बनाने मैं राहुल गांधी की तरह बोल रहा हूँ ना स्टीव जॉब्स और माइक्रोसॉफ्ट ठीक है तो वो नहीं आएगा आपको गूगल तो वो नहीं आएगा आपको एप्पल का हेड बनाने के लिए कुछ करने के लिए सो दीज स्मॉल थिंग्स विल रियली रियली वर्क तो टू डू लिस्ट बनाओ और टू डू लिस्ट के बाद अपने गोल्स लिखो और गोल्स लिखने के बाद एक बार टू डू लिस्ट को फिर से रिव्यू करो कि क्या मेरे गोल्स और टू डू लिस्ट अलाइंड है या मैं लिख रहा हूँ कि गाड़ी का पंचर लगवाने जाना है और वहां लिख रहा हूँ कि जैगुआर लेनी है दोनों मिलते नहीं आपस में कहीं पर ठीक है तो थोड़ा सा उसको अलाइन करना जरूरी है बट सो माय ओपिनियन मैं फिर से समराइज यही करूंगा कि कितना हमें आता है वो मैटर नहीं करता हमें जितना आता है हम उसको कितना स्मार्टली करते हैं वो मैटर करता है लाइफ में ठीक है तो मैं सिग्नेचर के लिए छोटी सी चीज बता देता हूँ कि मैं पंकज सिग्नेचर अपना में भी 10-12 साल पहले कॉलेज में तुम्हारे ऐसा ही था तो चेंज किया था तो चेंज कैसे किया था मैं पंकज में ना पी नहीं लिखता कभी भी मैं मर्सिडीज का साइन बनाता हूँ मेरे को तब ये था शौक कि यार मैं मर्सिडीज लूंगा और मर्सिडीज को गोल कैसे बनाऊं उसको साइन में ही मर्सिडीज का साइन लगा देता हूँ अब यार तब जैगुआर वगैरह नहीं आ रही थी तो ऐसे गाने भी नहीं आए थे पहला जैगुआर ले लो और ये कर लो मैं यार ऐसा नहीं होता है नहीं तो मैं पक्का जैगुआर का ही साइन बनाता अपने साइन के बीच मगर गाना तब आ गया होता था ठीक है तो मैं मेरे साइन में ना मैं मर्सिडीज का लोगो बनाता हूँ पी नहीं लिखता हूँ तो कई लोग मुझसे पूछते पी कहाँ पर है मैं यार किसी को बताया नहीं तुम्हें बताओ बहुत एक्चुअली कईयों को बता भी चुका हूँ ठीक है so you should have your aims goals very clear in front of you
मैं खत्म करता हूँ यार, ये चलता ही रहेगा नहीं तो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for sharing those pearls of wisdom. I'm sure your advice will enable us to get closer. I'm not to sure. our- I'm not sure. I have a great luck line. I'm not sure it will work for you or not. It's your luck. Conventus is a forum where we, the student fraternity of IMI New Delhi, in collaboration with the Council of Student Affairs, come together for a celebration of ideas and identities. Ladies and gentlemen, the closing of Conventus 2016 with hopes of a bigger and better Conventus 2017. I would now like to invite our guests to proceed to the lobby area for dinner. Students are requested to kindly remain seated. You? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. My honor, sir. I'll take this. Sorry? I'll take that here. Bring it in the No, back. it's okay. It's not too heavy. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thanks for calling me. Thank you, sir. Please, sir. Thank you. ये कौन सा माइक है?